So we are starting with the alternative investments. Okay. So the first and foremost question is, or we are just comparing this to the alternative investment versus traditional investments, or alternative assets versus traditional assets. So traditionally, a investor would invest into all this. Like either they'll buy a bond and they want the interest income in the future, either they'll buy stock and they want the stock to grow, and so that they can get some good returns by the increase in the stock price, as well as the dividends they can get yearly. Okay, so these are the most well known and widely used investments. Fine, the traditional assets or traditional investments. So include cash positions, long positions in cash. Long is nothing but you bought a stock, you want to hold it for a longer period of time, you want the prices to increase, and you want to take advantage of that, the benefit from that. Okay, that is long position. ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर. फाइन. अच्छा, Yeah. ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्या है? अ नॉन ट्रेडिशनल एसेट encompass many different categories including real assets, hedge funds, commodities, private equity. ये आपके चारों भी alternative assets हैं. Fine. Now let's dig deeper into this. रियल एसेट्स आर नथिंग बट रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में क्या करते हैं? लैंड हम लोग परचेस करते हैं, ओपन लैंड्स, फार्म लैंड्स. वी वांट दोज पर्टिकुलर land prices to go up, and we want to enjoy the benefits after a long span of time. Correct? Long period. So this is for long period, 10-20 years you want to hold, and you want that area to develop, and from the development aspect you want the line, you want to enjoy the higher prices, or when you sell that, you would definitely get a very good return or a higher price than what you spend to purchase that. Fine. Suppose I bought a land for 5 lakhs in the outskirts of Hyderabad, where right now there's a lot of supply. So when there's a lot of supply, the land prices will be less. But what happens, एक 10 years के बाद क्या होगा? वो लैंड, वो वहां पर सप्लाई कम होकर डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज सिटी इज एक्सपैंडिंग. Land will become scarce in coming future, so definitely your prices will go up and you can sell and enjoy good benefits. So real assets are investments that directly control non-financial assets, like I said, land, building, and represent actual rights to consumption. So definitely when you hold something, you can consume, you can use that, rather than indirect financial claims or cash flows generated by tangible assets of a firm. So please understand. See, please understand. Real assets are investments that directly control non-financial assets. So you invested, you are a CEO, or you have a company. You have invested in some land. Okay, represents actual rights to consumption. You can directly consume it. It's your property, rather than indirect financial claims on cash flows generated by tangible assets of the firm. See, the firm's assets are not yours. It is the investors' assets, the shareholders. But if you have your own assets in which you have put your money, definitely that would be your own, and you can directly use that. Fine. You will be having a direct claim on that rather than indirect claims. Now, a typical financial asset such as bond is a claim on set of cash flows of a firm. See, if you have invested on bonds, you will get definitely interest in the future, and you claim that. Whereas a real asset is investment in an actual physical asset such as land and permanent improvements to land, timberland, that is trees. Underlying land is not always part of the investment. So trees and all also you have. Infrastructure like toll roads, utility companies, etc. claim on the cash flow generated by these assets, and some of the intellectual property like copyrights, patents, trademarks, royalties. These are all your alternative assets under the real assets. On all these are all owned by you. Okay, you have a direct control on them. Fine. हेलो. Yeah. Yes. 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 ये आपका ही है ना सर? तो आपका ही, आपका क्लेम रहेगा उसके ऊपर ऑलवेज Yeah. Yeah. Exactly. डायरेक्टली. Hmm.
इंट्रिंसिक का मतलब एस्टिमेटेड. सो ये पूरा आपका रियल एसेट्स, प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, लैंड, इक्विपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस. फाइन. It's a tangible investment that has some estimated value due to its substance and physical properties. All this what I've explained you. So this is what all assets can be said to be of economic value. That means definitely when you exchange it, you'll be getting good cash. So you are investing your money in the physical assets like land, building, property, or commodity, precious metals, etc. Okay. Here are some of the more examples you can see. Okay. So people invest in real assets. So real estate investment. See, there are some real estate investment trusts also. We'll discuss about that. So land and commercial properties, including apartments, office, warehouses, malls, etc. Infrastructure, assets and networks used to transport. ये सब कुछ भी आता है सर इसमें. Mhm. Now, now we are discussing about the another alternative investment which is hedge fund. Hedge funds are private investment vehicles. See, like mutual funds, there are some hedge funds even. Okay. So here we can have some discussion regarding this. So here we have real estate funds. रियल एस्टेट फंड्स भी रहते हैं सर. आप अपना पैसा कुछ ऐसे कंपनीज में लगाते जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता. ओके. एंड इंक्रीमेंट जो प्राइजेस का होता उसके बाद उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते रहेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट रियल एस्टेट फंड्स? No, हेलो. no, no, Jen. Yeah. First time I'm See, these listening real this. estate funds are nothing but your money is put into real estate O- projects. Okay, like. सो हाँ, ओनली इनटू रियल, मतलब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, तो वो क्या करेंगे, आपका पैसा रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में लगाएंगे. लॉकअप रहेगा 7 to 10 years. वो रियल इस्टेट Okay. प्रॉपर्टी का वैल्यू ग्रो करेगा ना सर, आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा उसके ऊपर. अच्छा, long term जैसा. हेलो. Yeah, yeah, like long term investments क्या? होटल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह. Like there are some examples given here. Alternative investments. These are like vehicles in which you put your money, like funds only. We will see real estate funds. पेंशन फंड भी होता है, डिफरेंट. लाइक नॉर्मल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे डिफरेंट रहता है. आई विल शो यू द रियल एस्टेट फंड्स.
So real estate investment trust is a company that owns, operates or finances income generating real estate. ये म्यूचुअल फंड के जैसा रहता. These guys, the REITs, pool the capital of numerous investors. This makes it possible for individual investors to earn dividends from real estate investments without having to buy, manage or finance any properties themselves. Okay? मतलब आप वो फंड में पैसा लगा रहे सर, एंड वो फंड बढ़ता रहेगा, आपको रिटर्न्स आता रहेगा. यू नीड नॉट बाय दैट प्रॉपर्टी. करेक्ट. Yeah. वो But returns it's कैसे kind है of a सर? fund. So that means it is kind of, these funds will help the real estate companies to like build their real estate projects. Okay. Got it? Yeah. Like these returns, like how, what is the period? Like when we'll be getting if लॉक इन we पीरियड रहता सर उसका 5 to 10 years. 5 to 10 years, उसके बाद ही हम क्लेम कर सकते हैं क्या ना? उसके बाद हाँ, आपका वो फंड कुछ एक मेच्योरिटी रहता होगा सर. उसके बाद आपका फंड का मेच्योरिटी हो गया तो आपको रिटर्न्स मिल जाता, हो गया. Yeah. In between we'll be getting coupons, all this. मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसका कैसा रहता, हाउ इट वर्क्स. Okay. So here we are. So in March 2019, the first real estate investment trust or REIT came out with an IPO for Indian investors. Okay. This paves the way for Indians to invest in real estate sector without actually having to buy expensive real estate. Fine. Correct. Okay. Yeah. So what are REITs and how do they work? Well, REITs are not all that different from mutual funds, except that instead of investing your money in equity or debt, they invest your money in real estate. REIT either purchase property or are involved in property development. So they make, so I said already, so they make money in two ways, capital appreciation and rental income, which is then passed on to investors as dividends. Fine. Okay. तो क्या होगा सर, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा या रेंटल आएगा, उसको वो पैसा को आपको देते रहेंगे. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. दैट्स व्हाट. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड सर. वो रेंट या कैपिटल अप्रिसिएशन जो पैसा आएगा वो आपको देते रहेंगे, पास ऑन करेंगे आपको. Okay. So now we are into the hedge funds. So hedge funds के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे डिटेल्स में. लेट्स सी. हाँ, hedge funds are private limited partnerships kind of. So unregulated, these are not highly regulated by the stock exchange commission. Term hedge funds is misleading actually. Activities are not restricted to reducing risk. Actually hedge का मतलब क्या होता है सर, you want to Risk. reduce your risk, but here the Yeah. activities what they do is not really restricted to reducing risk. They take risks here, but Okay. they take some risks with some particular plan or caution. So generic term for funds who engage in a wide range of activities that attempt to generate superior returns. So क्या होता है सर, फंड्स का मतलब क्या होता है, आप जो पैसा जिस भी फंड में लगाते हो वो पैसा वो क्या करते हैं, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में लगा के आपको रिटर्न्स देते हैं. करेक्ट. व्हाट दे जनरेट फ्रॉम देयर दे पास ऑन टू यू. करेक्ट. एंड इट्स काइंड ऑफ अ मीडियम टू प्रोवाइड फाइनेंस और फंडिंग टू दैट कंपनी. देन ओनली दे विल अर्न रिटर्न्स. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. The company should run and the investor should get returns. That is what it is the thing. So hedge funds are not an exception to that. They are also like mutual funds, but these are somewhat different from mutual funds. Like they work differently, because in mutual funds like open end fund, close end fund, I think I've given the mutual funds videos also. I think sir, आपको मैंने दिया था. Yeah. ओपन एंड फंड रहता है, क्लोज एंड फंड रहता है, उसका अलग है. हेज फंड्स में क्या है बोले तो आपको ये वेल्दी इंडिविजुअल्स लगा सकते हैं. एंड देयर आर सम स्ट्रैटेजीज आल्सो, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स आल्सो इन दिस. ओके. मतलब लॉट मोर फ्लेक्सिबल. दैट्स व्हाट. फीस 1 to 2% of assets
अंडर मैनेजमेंट बड़ा फीस लेता, प्रॉफिट्स आपको 20% तक प्रॉमिस करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज 2 and 20, मतलब they take the fees and give 20% returns. Fund will often have a hurdle rate. That means there is some rate they fix. कितना तो मिलना चाहिए minimum. Hmm. And like 8 to 10%, like either they link themselves to some index. Investor qualifications are the same for hedge funds as for private equity funds. As you're owner of a company, you should get returns. You own this fund, you should get returns. And only high net worth individuals go into this, and pensions and other institutional investors, बहुत बड़े बड़े funds which have lot of money, they go into this. Oh, what is that hurdle rate exactly? Sir, hurdle rate is like you should get at least this much minimum returns. Okay, okay. उसके नीचे फायदा नहीं है ना सर. No one will Yeah, yeah. invest. Yes, yes. Now many strategies exist here. The most popular long short equity, either you can go long, you can buy and hold, or you can sell and again buy back at lower prices. Okay, short equity, market neutral or no bias. That means I will explain you this one. So here long short equity, what we discussed, short sell equities the manager believes are overvalued. That means if you think that the stock is overvalued, you should sell, and then again, or else it will drop. If you think the stock is undervalued, you'll buy and hold. Portfolio manager waits for the positions to converge. That means what is converge? Coincide. Hello? Okay. Yeah, okay. So they wait for the positions to coincide actually, buy and sell. In the event of a broad market falling prices, the short positions offset the long positions. मतलब मार्केट अगर गिर रहा है तो शॉर्ट पोजीशंस यानी आप ज्यादातर बेचेंगे ना सर, rather than long. So many people will be going short rather than long. Okay. Now, so the portfolio can have a long or short bias. What do you mean by bias? Bias means it is like towards one thing. Hmm. Long bias, portfolio has more long positions than short. Short bias, more short than long. Neutral, long and short are in balance. Okay. These are the strategies under hedge funds. Many managers attempt to achieve a higher beta in rising markets and low beta in falling. मतलब अगर markets rise कर रहा है तो risk भी रहेगा सर ज़्यादा, correct? So beta will be high. And market fall कर रहा है तो risk कम रहेगा तो beta will be low. So सर मार्केट राइज कर रहा है मतलब हायर बीटा मतलब क्या सर, राइजिंग मार्केट्स में रिस्क ज्यादा रहेगा ना सर, कभी भी गिर Uh-huh. सकता है. फॉलिंग में Yeah. तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि वो गिर रहा है. Hmm. So what happens is to adjust that beta you can use futures and options. That means you are taking the help of derivatives. How you can use futures and options? See, suppose you think the stock is going to fall, you can take short futures also, no? Yes. अगर आप एक स्टॉक पे लॉन्ग है, if you are long on a stock and you think that the stock value is may fall in the future, so you take a short futures. So the loss from the long stock because of the fall, which is an adverse move, which is an adverse like movement which you didn't expect, can be offset with the short futures in that in some stock, correct or wrong? Yes. हेलो Yeah, yeah. Yeah, Jan. सर, Yes. समझ में आया? Yeah, trying to get. सर एक सेकेंड. हेलो. Yeah, Jan. या सर एक सेकेंड. Okay. लेट इट ओपन वंस.
सर 2 minutes में चैप्टर हुआ क्या, एक बार चेक करो सर. ये सर मैं just a second sir. I think this is a different chapter. Hello. Yeah, Jen. Hello. Yes, Jen. Hello. Huh. Okay sir. Yeah. Just a second. Okay sir. Fine. नहीं करे. Yeah. So I was explaining something. सर अभी आप एक स्टॉक लिए $100 SBI, ₹100. Okay. You thought it will go up. You're long on this. That means the motive or intent is to hold it for long period of time and get benefits on the price rise. But there Okay. can be adverse movement. वो गिर भी सकता है, correct or wrong? Yeah. So you take a short futures. Okay. 3 months का, ये 3 months तक आप होल्ड करने का सोच रहे हैं तो आप शॉर्ट फ्यूचर्स लिए SBI का फॉर 120 फ्यूचर्स, यानी आप बेचेंगे इसको. द इंटेंट इज टू सेल when the prices you should pay, or you take put option for example. For ये भी ले सकते हैं, put option भी ले सकते हैं. Put option is option to sell. Options are even more better than futures. फ्यूचर्स में क्या हुआ, अगर नहीं गिरा ना सर, शॉर्ट फ्यूचर्स में अगर नहीं गिरा तो आपको और लॉस होता, इधर भी जाता उधर भी जाता. अच्छा, लॉस नहीं होता, मतलब यू मेक ए स्ट्रैटेजी बिकॉज यू थिंक अगर वो नीचे जाएगा तो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लॉन्ग इन दिस. इफ यू हैव लॉस इन दिस, इवन अगर मार्केट ऊपर भी गया तो that loss can be offset with the prices which with the high price you can get for this, correct or wrong? Yeah. Suppose ये 150 चले गया सर, एंड फ्यूचर्स में आपको, शॉर्ट फ्यूचर्स में यू हैव बेनिफिट इफ द प्राइसेस फॉल because you will sell at 120 if it is 80 also. Got my point? Hmm. Hello. Yeah, Jen. You have an idea sir about this? Futures, okay, idea तो है but not सर मैं because we are डेरिवेटिव्स का वीडियोस दिया ना सर आपको. दिए थे but only starting introduction, वो सब starting वो देखा था. We did not complete नहीं it, सर right? आप, This one? हाँ, हेलो. Yeah, Jen. We have not completed या this one, right? कंप्लीटेड सर, मतलब वीडियोस दिया था उसमें है ये. ओके फाइन, आप इसको समझिए. ठीक है. अभी शॉर्ट मतलब देयर इज you have taken a futures contract to sell at 120. If the price falls and if it is to 80,
then need not worry, you are going to sell at 120 only as per the contract. Yes, yes, So I here you remember have a this one. 40 ka Yeah. profit. That means to sell at 120, you can buy at 80, sell at 120, get a profit of 40. Okay. Okay. Yeah. And here, what you expected, the stocks will go up. This is the so, but the market has gone down. Mm-hmm. Futures market has gone down. Futures market has gone down. Okay. Okay. हाँ, तो इसमें आपको लॉस हो रहा. स्टॉक जो है आप कोई दूसरा स्टॉक का लिए सर फ्यूचर्स, ये स्टॉक अभी बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये गिरे तो आपको फायदा है, ये गिरे तो आपको 40 का प्रॉफिट है, और ये स्टॉक पे आप लॉन्ग है, यू थॉट कि दिस विल गो अप बट दिस हैज गॉन डाउन टू 80, सो हियर अ लॉस ऑफ 20. but since you have taken a futures contract, this loss is offset by this profit, so 20 का net profit है आपको, Yeah. correct. Mm. So you were long on this, but there was an adverse moment, the price has fallen. So जो futures contracts आपको profit आया और ये stock जो long थे आप उससे जो loss आया, दोनों set off हो गया. So this is what you can expect in hedge funds. They can take the advantage of strategies. They can go for strategies. So they can take long positions, short positions, correct. Mm. And many managers attempt to achieve a higher beta. So when the prices are rising, there is more risk. When the price is falling, there's a less risk. Okay. And they can use futures and options. Where are we? Sorry. They can take the advantage of futures and options. Where is that? To Yeah, adjust Aaron. the beta. So did I do the same thing? There was a risk here, correct? That the prices can fall. And the prices Yeah. have fallen, correct or wrong? Yes. So this risk I have reduced or minimized with this hedging. I have taken a futures, short futures, and I have taken a put option. For example, put option and short futures work in the same way. The only thing is this is a right, but not an obligation. This is an obligation. That's it. So Yeah. आप क्या कर रहे सर यहाँ पर आपका जो like बीटा था, that means the risk was very high for you in this long position. That risk you have minimized with this short futures or put options. Correct or wrong? Yeah. Yeah. That's it. Yes. That's what I wanted to explain. Actively manage risk with derivatives, which we discussed. So that, for example, एक छोटा example लीजिए sir. You are giving goods on credit to your customer. Okay. There is a high risk that he may default. So what you can take? Credit default swap. Okay. So if the guy defaults, okay, you have already taken a credit insurance. Yeah. Like the credit insurance, nothing but credit default swap. So this will act like an insurance for you. So here, if the customer defaults, still the insurance you have, and that can minimize your losses. Correct? Yeah. Insurance company will reimburse you on your claims in the adverse event of the customer defaulting. So that all you can have the advantage in hedge funds. That is what I'm explaining. Okay. मतलब ये सब का फायदा है सर आपको हेज फंड्स में, ओपन एंड फंड्स में ये सब नहीं रहता, क्लोज्ड एंड में भी नहीं रहता. नाउ benefit from event driven funds. The hedge fund strategy is event driven funds. Okay, so benefit from many types of events that can cause a change in value. So certain events मैं आपको बताया ना सर, अभी ये credit default swap, it's an event. When the customer defaults, that is an event. Correct or wrong? Yes. So what comes to your rescue? Credit insurance swap. Yeah. Credit insurance or credit default swap. Now, funds must consider the probability of event occurring and event examples, litigation outcomes. अब litigation में आपका कुछ फंस गया तो this fund can at least come to your rescue अगर आप अपना पैसा इसमें लगाए तो. There is a corporate spin-off,
there's a leverage buyout, merger and acquisition, like hostile takeovers, for example. So that point of time, if you have some good money in the funds, that can come to that you can use for your rescue. Bankruptcy announcements. Okay. So event driven funds allocate capital to profit when specific events occur, if they occur, for example. So event driven funds allocate capital. सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कैपिटल का जरूरत है, so this funds can provide you, correct? Hello. Yes, yes. Yeah, Jen. See, this kind of events can come to you ना. So for your rescue you can take Yes. this hedge funds. आप ये hedge funds में पैसा लगाए तो ये events अगर कुछ हुआ तो hedge funds से आपको पैसा मिलेगा. Like आपको इंश्योरेंस के एग्जांपल दिया ना सर मैं. Yeah. सो अगर आप अपना हेज फंड्स लिए, हेज फंड में पैसा लगाए तो ये हेज फंड्स आपको हेल्प करेगा जब कभी भी ये इवेंट हुआ तो, बिकॉज वो इवेंट स्पेसिफिक फंड है. Yes. Yes. आप देखिए, इवेंट ड्रिवन एक्टिविस्ट मतलब आपके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपको. अगर आपको कोई कोई कंपनी को आपको आपको कोई दूसरा कंपनी खरीदना है, यू वांट टू टेक एडवांटेज बाय बाय मर्जिंग विद सम कंपनी, merger arbitrage. Okay, you have some kind of advantage with that. Okay, so what is this? First of all, hedge funds are private investment vehicles that capitalize on various investment opportunities. यानी when you have such kind of events, these funds can help you to do that. So distrust, event driven multi strategy, ये सब में आपको हेल्प करेगा ये. आप यहाँ पर देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कुछ लाइव एग्जांपल्स. So see, many people are tilted towards hedge funds these days. A hedge fund is just a fancy name for an investment partnership actually. So you are seeking some help for your investment. This fund is giving, this fund is like a partner to you. Okay. So what happens? Very big investors go into this, and they provide you the funds when you are in need. Got my point? Mm. Hello. Yeah, yeah, Jen. सर अभी आपको एक ऐसा इवेंट आया है कि देयर इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर फॉर योर कंपनी, सो यू वांट Okay. समवन टू रेस्क्यू, यू वांट समवन टू कम टू योर रेस्क्यू. तो ये हेज फंड्स आएगा, आपको हेल्प करेगा. इसमें कौन पैसा लगा रहा? वेल्थी इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा. दीज गाइज हैव लॉट ऑफ मनी. वो आपके कंपनी में पैसा लगाएगा. दैट्स इट. So hedge funds are financial partnerships that use pooled funds and employ different strategies to earn active returns from their investors. आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, आपकी कंपनी को बचाएगा, बाद में आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा. That's it. So whenever Okay. some events are happening, these guys will provide funds and they will kind of enjoy the benefits and pass on to their investors. Now, अब देखिए सर, it is just a fancy name for an investment partnership that is freer rein to invest aggressively and is a wider variety of financial products that most mutual funds. Okay, than most mutual funds. मतलब यहाँ पर बहुत products हैं इनके पास. It's the marriage of a professional fund manager who is often known as general partner and the investor sometimes known as limited partners. तो एक fund manager रहेगा इसका and investors रहेंगे, और they pool their money into the fund. That's it. And the motive is to see the opportunities and invest. जैसे यहाँ पर देखिए सर, आपको बताता हूँ.
Now, event driven strategy is a type of investment strategy that attempts to take advantage of temporary stock mispricing, okay, which can occur before or after a corporate event takes place. तो क्या होता है सर, corporate events मतलब ये पूरे corporate events है, and because of this the stock prices may go up or go down. Fine. Okay. So it is most often used by private equity or hedge funds because it requires necessary expertise to analyze corporate events for successful execution. अब ये these are the corporate events like bankruptcy. अगर लगता है कि कंपनी bankrupt होने वाला है, मर्जर होना है, मर्ज होना चाह रहा दूसरे कंपनी के साथ, they want to acquire some other company, okay, spin-offs and takeovers, ये सब. Excuse me. Yeah. Now, so an event-driven strategy exploits the tendency of a company's stock price to suffer during the period of change. Definitely. So understanding all this, okay. So like an event-driven strategy refers to an investment strategy in which an institutional investor attempts to profit from a stock mispricing that may occur during or after a corporate event. मतलब क्या होता है सर, अगर आपकी कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, सस्ते में बिक रहे हैं, so someone wants to take advantage. If your company wants to like merge with some other company, so that point of time the stocks will be down, correct? Yes. If your company is going bankrupt, for example, you want someone to buy your company and get relief from the debts what you have towards your creditors, so you have to sell it very cheap price. So these are the points where definitely someone would like to take the advantage. So generally investors have teams of specialists to analyze corporate actions from multiple perspectives. So there are some investors who always look out for these opportunities. So example of corporate events include mergers and acquisitions, regulatory changes, earning calls, etc. So let's see an example. Event driven strategies have multiple methods of execution. In all situations, the goal of the investor is to take advantage of temporary mispricings caused by all this. Okay. Suppose some company wants to reorganize, so they want funds, they want to merge with some other company, okay, either by way of acquisition or with joint venture, anything. So investors who use an event driven strategy employs team of specialists. Okay, fine, this is not an important point. Let's see example of an event driven strategy. Stock price of a target company typically rises when acquisition is announced. Yes, if I want to acquire some other company, so definitely what happens, that company which I want to acquire, उसका stock बढ़ जाता है because I am showing demand for it. Correct or wrong? Yes. Yeah. So a skilled analyst team at an institutional investor will judge. मतलब कोई बड़ा company है like pension funds and all, they will judge whether or not the acquisition is likely to occur based on a host of factors such as price, regulatory environment, and fit between the services offered by both companies. If the acquisition does not happen, the price of the stock may suffer. अगर वो acquisition नहीं हो रहा तो price नीचे जाएगा, correct? Hello? Yeah. So now Yeah, what Ajay. happens? This definitely people want to take advantage of this. So analyst team will then decide the likely landing place of the stock price if the acquisition does happen. So based on a careful analysis of the market and acquiring companies, if there is enough potential for upside, the investor may buy shares of the target company to sell after the corporate action is complete and the target company stock price adjusts. मतलब क्या होता है, if there is enough potential, मतलब उसको लगता है कि ये थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, परचेस कर लेगा और क्या करेगा, उसको बाद में बेच के अपना पैसा निकालेगा, करेक्ट? हेलो Yes, James. सर, देयर इज सम कंपनी जिसका स्टॉक खरीदे तो मेरे को 15 रुपीज में आ रहा एंड आई थिंक द प्राइस इज गोइंग टू गो अप, ओके, तो
when it is going to go up, when some acquisition is definitely going to happen. So I want to buy at 15, and when the event really happens, the price will somewhat go up. It will go to Yes. 18. So I will sell. Yeah. Mm. Yes. Now, अभी हम जो डिस्कस करें बहुत सारे हैं सर उसमें, ठीक है. Yeah. So event driven category of hedge funds, activist hedge funds. एक्टिविस्ट मतलब वो स्टॉक होल्डर्स जिनका जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते कंपनी में, वो लोग एक फंड बनाते अपना मनी पूल करके. दे लुक फॉर सच इवेंट्स वेयर दे कैन इन्वेस्ट एंड टेक द एडवांटेज. यू गॉट माय पॉइंट सर, व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. Arjun. That Yes. is what they do. Whenever there is an Yeah. event, these guys pool their money, put their money into that, and try to take advantage. That's it. Advantage. Yeah. So now distressed funds buy up the stock or debt of a company who is in bankruptcy proceedings. मतलब ये fund form करके ये सब करते सर वो लोग. Whenever there is a crisis, they buy at very less price, okay, and they create demand and then sell at higher prices. They try to take all the advantage of all these situations, and fund managers generally do this. Okay. Now, merger arbitrage funds like speculate on the completion or failure of a merger. Merger होने वाला था, ठीक है. Mm-hmm. Hello. Now it is available at cheap. So Okay. you don't want that event. मतलब वो event के बीच में और merger मतलब merger होने वाला है, अभी नहीं हुआ. The prices are up, but still since the merger has not happened, the prices come down. But in future it may happen. So you take at less price, and when the merger happens, the price will go up definitely. You want to take advantage of that, correct? Hmm. Yes. Yeah. Now, so ये आपका futures funds, फ्यूचर्स फंड्स हमारे टेक्स्ट बुक में देखेंगे कुछ है. सर आपका हेज फंड का जो लॉकअप नोट मतलब इसका कुछ पीरियड होता है जितने में आपका फंड लॉक्ड अप रहेगा, ओके. Yeah. Yeah. तो लॉक इन पीरियड भी रहता है. सी एवरी फंड हैज दैट लॉकअप पीरियड. फाइन, यू हैव टू जस्ट पुट योर मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ हेज फंड स्ट्रेटजीज में हम इवेंट ड्रिवन तो चेक कर चुके हैं सर. सो इवेंट ड्रिवन में मर्जर आर्बिट्राज बाय द शेयर्स ऑफ द फर्म बीइंग अक्वायर्ड, ओके. जो कंपनी जो कंपनी को आप बाई करने वाले हैं उसका शेयर्स आप खरीद लेना और उसको बेच देना जब अक्वायर करेंगे तब. तो यू कैन बाय एट चीप एंड सेल एट a higher price. Distressed, Oh. you can buy undervalued securities because it's a distressed security, and when Okay. the time comes when it will go overvalued, you can sell short. Activist shareholder buy sufficient equity shares to influence a company's policies. That means if there is a company, so you and some of the shareholders will form a group, and you always pose a lot of questions to that company. So those kind of people are called activist shareholders. So now what happens, you and the group of people will try to purchase bulk of the shares, okay. Hmm. And you will try to influence the company's policies. The goal is nothing but to increase company's value.
Okay. Some special situation, invest in securities of the firms that are issuing or repurchasing securities. That means just अभी issue होने वाला है IPO, और spinning off divisions and selling assets or distributing capital, मतलब जो अभी बेच के बाहर निकल रहा है. And selling short, you want to buy and sell short a related security with the goal of profiting when a perceived pricing discrepancy between the two is resolved. That means the aim is nothing but to buy at lower price, sell at higher price. Okay, that is taking the arbitrage opportunity till the market settles till the demand and supply forces settle the price. Convertible arbitrage fixed income. That means you have a convertible bond, sir. Convertible bond का मतलब क्या है? This bond can be converted into equity. Okay. Okay. Yeah. So when you bought the bond was of $90, and company told you that on redemption they'll give you $100. Correct? Okay. And they have promised you a coupon of 10%. So on redemption, what happens when they want to redeem? For example, let's forget this. So I'll not make the things complicated. So $90 में आपको bond बेचा, $100 में they want to redeem. So what will happen is this particular bond, which is of $100, can be converted into, for example, 40 stocks. How many stocks? 40. At the rate of $2.5 per stock, for example. Now, what you will look into is when you convert this, you will check the conversion premium. That means whether it is beneficiary for you to convert this, or better to take the redemption value of the bond. For example, sir, I'm not going into details. You don't have all this. Let's say the conversion premium happens to be $110. How much? $110. तो अब क्या हो रहा sir? How much they have promised you to redeem? Okay. How much they promised to redeem you? 100. If it's a bond. 100. But if you convert this, stock का value बढ़ता ना sir? बढ़ता, yeah. Stock का value बढ़ता. So convert करे तो आपको इतना मिल रहा सर. तो कौन सा better है? Yeah, 110 is better, right? That's what. So that is the benefit you can take. Okay. So exploit the pricing discrepancies between the convertible bonds and the common stock of issuing companies. Now, that means you may get an advantage. ये arbitrage opportunity create और आपके लिए. Take the advantage of that. Okay. Asset-backed fixed income. That is mortgage-backed security. That will give you some fixed interest. So you can exploit the pricing discrepancies among various MBS and asset-backed securities. हम क्या कर रहे हैं सर इसमें? ये सब आपका hedge fund strategies है. That means you invest your money in this, okay? And the money you invest in this, the money is invested by very big investors. That money is pooled by the fund and used for all these opportunities, what they can get in the market, and trying to benefit out of this, correct? Yeah. So ये सब strategies लगाएंगे वो लोग, आपको कहीं से भी returns लाके दे सकते हैं. इतना flexible है, you won't find such flexibility in any funds. Now, general fixed income, exploit the pricing discrepancies between fixed income securities of various types. Volatility, trying to take advantage of the volatility in the market. The more volatile the market, the more returns you can expect. मतलब risky investments में पैसा लगाना. Okay. अभी रिसेंटली एक कंपनी है सर, उसका स्टॉक्स बहुत कम था, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आया इन्वेस्टर्स को. मैं आपको बताता हूं, मैं परसों ही उसका नाम देखा. अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज गोइंग वेल इन द मार्केट. Okay. आई थिंक यू मे बी नोइंग दिस. दिस इज लाइक द पेगाट्रॉन एंड विस्ट्रॉन ऑफ इंडिया. वो फोन का पूरा पार्ट्स वगैरह बना रहे वो लोग. अच्छा. Okay. नाउ मल्टी स्ट्रैटेजी, एक्सप्लॉइट प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसीज. Discrepancy मतलब the pricing what it should be, it is not like that. So you want to take advantage. जैसे सर क्या होता है, अब pricing discrepancy का सबसे easy example, you want to you know Mysore,
So in Mysore, if you purchase a sandal wood, like for example, you purchase a silk sari there, you will get for 1,000 rupees. But if you purchase that in Hyderabad, you'll get for 2,500. Correct? Mm. Correct or wrong? Yes, yes. So what happens? Many people start buying from here. Mm. So यहाँ पर बहुत लोग आके डिमांड बताने से क्या होता है, इसका प्राइसेस बढ़ जाता है. बढ़ना स्टार्ट हो जाता टिल द टाइम व्हेन these two prices are equal. ओके, सो अब यहाँ पर आप जब तक ये दोनों इक्वल नहीं है तब तक यू कैन टेक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, दैट इज प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसी. Okay. Macro strategies are based on global economic trends and events. लाइक जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं ना सर, मार्केट क्रैश हो, मार्केट अप जा रहा, डाउन जा रहा, कुछ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब अमेरिकन इलेक्शन आने वाला है, या लाइक मार्केट्स अभी ऊपर जा रहा है, ऐसे बहुत, अभी जैसे मार्केट कई बार क्रैश भी होता है, तो क्या करना. So at that point of time, people will see whether to go long, whether to go short in equity, fixed income, currency, commodities, किस में जाना है वो देखते. What is better, you see. अब US economy is booming. People buy lot of dollars. Correct? Mm. Correct or wrong? Yes, yes. When people see that real estate is going down, people buy more of gold. So क्या करना है, क्या strategy लगाना है? When nothing is in demand, gold will be in demand. When stock market is falling, what people would do? People would be definitely, see, investor always want their money to go up. Correct? Yes. तो वो क्या करेंगे? गोल्ड परचेस करेंगे. Yeah. अच्छा, अगर कोई बड़ा कंट्री है, उसका बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड क्रैश, मतलब उसका ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट हो गया, सो पीपल लूज इंटरेस्ट. वो क्या देखते हैं, अरे ट्रेजरी बॉन्ड भी डिफॉल्ट हो गया, सो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन आवर ट्रेजरी बॉन्ड्स. वो बहुत सारे लोग उसमें पुल करना स्टार्ट कर देते हैं, और दे जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट इनटू द ट्रेजरी बॉन्ड्स, सो दे डाइवर्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स सम अदर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज. अच्छा, अभी मैं आपको कल जीरोधा में दिखाया था. Now you are investing in stock, you are not getting good returns, so you'll go for what? Commodities. Paisa. Just a minute, sir. Okay. Equity hedge fund strategies seek to profit from long short positions in publicly traded securities and derivatives with equities as their underlying assets. सर मैं अभी आपको क्या बताया, SBI का स्टॉक का एग्जांपल लिया, you are long on that, and also you have taken a short position, okay, in SBI futures or ICICI, कोई भी एक futures में आप ले लिए. So if this goes down, correct, so this is there to rescue, this is there to minimize your risk of loss. Correct? आपका लॉस 40 होने का था, बट वो लॉस आपका क्या करा? हेलो, Yeah. so you have taken a stock at 100, you expected that to go to 150, but it has fallen by 20, so 80 हो गया. So Okay. 50 का प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन 20 का लॉस हो गया. Okay. Here you have taken short futures 120. अब सपोज वो लाइक 80 गया, 40 का प्रॉफिट आया, आपको लॉस आने वाला था ना सर, अब आपको प्रॉफिट Yeah. में कन्वर्ट हो गया वो 40 Yes. माइनस 20, 20 प्रॉफिट. Yeah. सो हेजिंग हुआ कि नहीं हुआ? Yes, happened. अच्छा, अगर वो सपोज ओनली 110 गए तो Still. 10 का प्रॉफिट था, 20 का लॉस था, तो स्टिल 10 का लॉस, बट योर लॉस ऑफ 10 एक्स्ट्रा हैज बीन मिनिमाइज्ड और नॉट? Yes. दैट्स व्हाट. ये होता है सर हेज फंड्स में. यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डेरिवेट, मतलब कोई भी आपका पैसा वो फंड में आता, पूल होता, और ये स्ट्रैटेजीज पूरा अप्लाई कर सकते हैं. आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं विद डेरिवेटिव्स. आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे तो शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स ले सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं, कुछ भी करके आप अपना कैसा भी करके रिटर्न जनरेट कर सकते हैं सर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स. थोड़े लोग क्या करते हैं सर, थोड़े लोग मार्केट क्रैश में कमाते हैं, याद रखो आप. जब कोई भी सेक्टर नहीं चला तो कौन सा सेक्टर चला? Pharma. Okay. अब Yes, क्या yes, करते थोड़े exactly. फंड्स, बहुत सारा पैसा इनमें लगा देते, खत्म, इसमें पैसा बना लेते. जिसके पास पैसा है वो कैसा भी गेम खेल सकते सर.
Okay. Some people earn with shorting. Short करो. Next. Market neutral. टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ये हो गया हमारा, थोड़ा बाकी है लास्ट पार्ट. दिस टू सेलेक्ट अंडर वैल्यूड इक्विटीज टू बी हेल्ड लॉन्ग. बहुत कम प्राइस, जैसे सर मैं एक स्टॉक था, मेरा एक फ्रेंड बताया 40 पैसे में मिल रहा सर वो, 40 पैसा. Oh my God. हाँ है सर. अगर आप ये 40 पैसे का सपोज 10,000 स्टॉक्स खरीद लिए. एक सेकंड सर, मेरा फोन दो ना. फोन का सर, एक सेकंड. हाँ Yeah. सर, दिस राकेश झुंझुनवाला बॉट द टाइटन कंपनी का स्टॉक्स एट सम पीनट प्राइस. ओके, कुछ 3 रुपए में कुछ खरीदा होगा सर वो. आज नए बोल तो अभी 400 करोड़ रुपए तक का वैल्यू हो गया उसको, वो स्टॉक्स को जितना खरीदा वो. बट वो Oh बल्क my में God. खरीदा. हाँ. सर 400 का सर 4,000 3 का करोड़ 4. कुछ लगाया सर, 400 करोड़ बन गया वो. सर ड्रामेटिक ना सर. 3 रुपए का स्टॉक, Yeah. अगर आपका 3 रुपए का स्टॉक अगर 100 रुपए का हो गया तो कितना हो रहा है सर आपको? 97 बढ़ गया, 97 करोड़ आ जाता ना सर आपको. Oh my God. Yeah. फॉर व्हाट द अमाउंट यू होल्ड. अब देखिए, अब ये मैं आपको बताता हूँ सर, ये कितना का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? 4,000. 10,000 स्टॉक्स कर दे 40 10,000 पैसे का, stacks. 4,000. Yeah. अब ये स्टॉक सपोज 40 पैसा हो गया तो क्या होता? 47. नहीं, 40 पैसा है ना. अब ये स्टॉक सपोज 4 रुपीज चले गया तो आपको 40,000 आता. कितना आ गया सर रिटर्न्स आपको? 40,000. 10 times आ गया ना. हाँ, आपको इन दोनों के बीच में 36,000. ये आपका 4,000 है. अब वो 40,000 बन गया तो आपको रिटर्न्स कितना आ गया? 36,000. 10 times आ गया था ना. 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000 9 times. इंटू 100, 900% का रिटर्न है आपको. 900%. Yeah. अगर वो अभी 10 रुपए हो गए तो आपको 4 लाख बन जाता सर. खाली 4,000 रुपए लगा के 4 लाख रुपए किसको बोलते सर? How much लगा देना इससे? हाँ सर, Sadly, we have to keep that 4,000. वो 4,000 आप सोचो सर, आप 4 संडेज को बाहर गए, 1,000 रुपीज बुफे मील खाए, 1,000 रुपए खर्च हो गया आपका. खत्म. 4 संडे को 4,000 रुपए खर्च करते ना, वो 4,000 रुपए इसमें डाल के रख दो, भूल जाओ कि वो नीचे क्या गिरता सर. वो अगर वो नीचे 20 पैसे भी गया, आपको 2,000 का नुकसान है खाली. बस. तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के अगर अपन पैसे लगाए ना सर, अपने को ज्यादा लॉस नहीं होता. ऐसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना. Yeah. ये एक ग्रो ऐप बोल के एक है जयंत. हाँ है ना सर. Yeah, I'm just seeing every day like the fluctuations and all those things. I'm thinking to invest in that. करना सर इन्वेस्टमेंट्स. अभी क्या है मतलब, अभी मार्केट में अंडर वैल्यू चल रहा, स्टॉक्स गिर रहा ना. राइट टाइम. म्यूचुअल फंड में क्या है सर, बहुत लॉन्ग है, कब आता कब नहीं आता नहीं मालूम. इससे अच्छा थोड़े स्टॉक्स वॉक्स परचेस करके रख लेना. आई विल चेक एंड टेल यू सर. मैं थोड़े स्टॉक्स का देखता हूँ. मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो ठीक है, उसके ऊपर नहीं, फंडामेंटल भी चेक करता हूँ मैं. ठीक है, लेट मी नो इफ इट इज देयर. श्योर आई विल टेल यू सर. मैं बताता हूँ, मेरे को भी थोड़े स्टॉक्स का तलाश है जिसमें थोड़ा पैसा लगाना है. मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको मैं बताता हूँ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने में क्या जा रहा. या लेट मी नो. विल बोथ इन्वेस्ट. लाइक दिस आई सेड 40 पैसा. दैट रियली सीम्स टू बी अ गुड वन सर. ऐसा टाइप का रहे तो भी अच्छा लगता है. 0.4 पैसा मींस व्हाट इज दैट? I will check. मैं थोड़े कंपनीज देखता हूँ सर, and I'll let you know. Okay? Sure. Do let me know. Yeah. Next. अब क्या सर, ये चैप्टर आप देखिए सर, दिखने को बहुत छोटा दिखता है, बट इसमें कितना पॉइंट्स है हिडन. Yes. उसके वजह से कितना, देखिए आप देखिए सर, लॉन्ग शॉर्ट कितना स्ट्रैटेजीज है वो, कितना हिडन पॉइंट्स है, यू सी. Yes.
So and to select overvalued equities to be मतलब always understood, कभी भी overvalued short करते हो और undervalued आप long करते, correct? शॉर्ट अंडर वैल्यू ज्यादा सर करते आज हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, हेज फंड्स तक खत्म करेंगे, फिर प्राइवेट इक्विटी कल से करेंगे सर, ओके? ठीक है सर कल मेरे को एक क्लास अलग से लेना है सर, मेरे को ये चैप्टर भी फुल स्टॉप डालना है, वो भी फुल स्टॉप डाल के नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ऐसे विष्णु आप ही नहीं बता सर, दो मेरे को कुछ भी करके वाइंड अप करना है सर ये कल तक, तो ये वो। या व्हाट इज अदर चैप्टर यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट हाँ सर, वही फिनटेक सर, आई विल जस्ट वंस लाइक सी फिनटेक दैट या एंड बहुत वी छोटा है कैन। चैप्टर ऑफ वो फिनटेक छोटा है सर, वो छोटा, एक सेशन में खत्म हो जाता। हाँ हाँ टेक्निकल कुछ नहीं है ना सर उसमें, where the strategies are involved now, there we have to put a lot of thought process या now. And in approximately equal amounts to profit from the relative price movements without exposure to market risk. Fundamental growth, अब जैसे क्या होता है सर, fundamental analysis whereby you check the statements of the company, ratios to find high growth companies. जो ग्रोथ है उसमें पैसा लगा लेना, उसमें क्या होता है, आपको डिविडेंड्स भी मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी आता। This is also one of the strategies of the hedge funds. Okay, buying the equities of some such companies which are showing a very good growth in terms of their by seeing their financial statements. Fundamental value, buy equity shares that are believed to be undervalued based on fundamental analysis. मतलब आपको वो कंपनी का ट्रेंड बता रहा है, that means P ratio is less, P ratio is somewhat falling. सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कम है, मतलब कंपनी का स्टॉक्स कम हो रहा सर, वैल्यू कम हो रहा, मार्केट में उसका डिमांड कम है, करेक्ट? या जस्ट अ सेकंड सर। Now, yeah. So buy equity shares that are believed to be undervalued based on fundamental analysis. Hence, so उनका क्या हो रहा है, P ratio कम बता रहा है तो वैल्यू अंडरवैल्यूड है. Here it is the hedge fund structure rather than type of asset purchase that results in classification of an alternative investment. मतलब here it is the hedge fund structure, एक हेज फंड के जैसा है, rather than the types of asset purchase that results in classification as an alternative investment. मतलब आप कंपनी का जो अंडर वैल्यूड है उसको खरीद रहे हैं, बाद में एडवांटेज लेना चाहते हैं जब वो बढ़ जाएगा. क्वांटिटेटिव directional, buy equity securities believed to be undervalued and short securities believed to be overvalued. मतलब you take the securities which are of less price, go long in that, and you take short. Suppose you are holding, सर आपके पास कुछ सिक्योरिटीज पहले से ही है, उसका वैल्यू बढ़ गया, उसको शॉर्ट ओके कर दो, बेच दो, उससे अच्छा रिटर्न्स आता है आपको, वो रिटर्न्स जो भी आ रहा है उससे आप अंडरवैल्यूड सिक्योरिटीज बाय कर लो, करेक्ट? यस हेलो? या Based upon the technical analysis. So market exposure may vary depend on relative size of the long and short portfolio positions. मतलब short the overvalued ones which you hold and get good returns and buy the undervalued ones. Short buy as I've discussed, मतलब आप ज्यादातर बेचना चाहते हो overvalued equities. सर ओके बेनिफिट्स तो बहुत है ना सर, आपको इतने सारे स्ट्रैटेजीज करने का मौका मिल रहा, बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कैसा बोलो आपका गेम खेल सकते, ओके?
But what the thing is, hedge fund returns have tended to be better than those of global equities in down equity markets and to lag the returns of global equities in up markets. तो ये अच्छा परफॉर्म करता है जहां पर डाउन है मार्केट, इक्विटी मार्केट. जहां पर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा है वहां थोड़ा कम परफॉर्म करता है, बिकॉज इक्विटी इज ऑलवेज इक्विटी. Equity is always equity. If it gives you returns, it gives you phenomenal returns. Now, different hedge fund strategies have the best returns during different time periods. So you always look for some kind of opportunity in hedge funds. Okay. So statements about the performance and diversification benefits of hedge funds are problematic because of the great variety of strategies used. So less than perfect correlation with global equity. That means equity के साथ आपका hedge fund का correlation क्या है? It is not the perfect correlation. It is less than perfect. That means अगर इन कैसा होगा? Suppose the correlation is 0.70. What does it mean? If the equity goes up, hedge fund, there is a 70% chance that hedge funds would also go up, correct? But 70%, Yes. that is less than perfect correlation. Returns may offer some diversification benefits, but correlations tend to increase during the periods of financial crisis. मतलब these correlations would change, they will not be fixed. Okay. Then the things would differ. Okay. सर कल यहां से करेंगे सर हेज फंड्स का ड्यू डिलीजेंस. ओके. Yeah. हम लोग को प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट तो खत्म हो गया सर. वी हैव डन रियल एस्टेट राइट नाउ. ये पार्ट हो गया हमारा. सो इसमें भी क्या है सर, आपका REIT एक्सप्लेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल रियल एस्टेट है. द पॉइंट इज द सेम. आपका पैसा वहां लगाएंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल का पैसा आपको देते रहेंगे. दैट्स इट. Okay. मतलब क्या होता है सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, इट इज मतलब REIT के बारे में छोड़ दीजिए, REIT हम डिस्कस करें. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज कंसिडर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट डायरेक्टली. सम बायर्स पे कैश बट मोस्ट टेक ऑन ए मॉर्गेज टू बोरो. Okay. मोस्ट टेक ऑन अ मॉर्गेज मतलब क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी का पेपर रख के बाई कर लेते. ओके. The issuer lender of the mortgage has a direct investment in a whole loan and is set to hold the mortgage. मतलब आपको कौन दिया सर पैसा? बैंक दिया. और मॉर्गेज किसके पास है? बैंक के पास है. Okay. वो इश्यूअर क्या करता है, इसको सिक्योरिटाइज करके MBS बना के मार्केट में बेच देता बॉन्ड्स के जैसा. ओके. हेलो. Yes, Jayant. Yeah. दैट वी नो ना सर, Okay. सिक्योरिटाइजेशन Yes. प्रोसेस. Yeah. So, Cycle रहता so है. property purchase with the mortgage is referred to as leveraged investment. That's what you have taken a loan and done. And owner's equity is the property value minus the outstanding loan amount. मतलब 50 lakhs का फ्लैट है, आपका 10 lakhs है इसमें. So your equity is how much? 10 lakhs. 10 lakhs. So 50 minus outstanding 40 is nothing but 10. That is your equity. Yeah. So changes in the property value over time therefore affect the property owner's equity in the property. मतलब जैसे जैसा प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है आपका इक्विटी भी बढ़ता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से. सेम थिंग कम्स फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट. हियर आल्सो आप उसको मॉर्गेज में खरीदे तो सेम थिंग, सेम प्रोसेस. एंड REIT तो मैं आपको समझा दिया सर. Yes. तो यहां तक रियल एस्टेट भी हो गया. अब हम लोग ये पोटेंशियल बेनिफिट से कल जाएंगे सर. ठीक है. देन वील गो फॉर कमोडिटीज. Yeah. Okay sir, tomorrow we'll try to maximum wind up bada chapter. I will try to wind up as much as we can. Okay. Okay. Done. Okay sir. Bye bye.